स्थापना 8 मार्च 2020 को मिस्टर रणधीर मिश्रा के द्वारा की गई थी। इसके एमडी मिस्टर नीतीश कुमार और सीओओ मिस्टर आदित्य हैं। प्रोफाउंड राइटर्स विभिन्न भाषाओं में लिखने का अवसर प्रदान करता है और आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, निजोटो, शेयरचैट इत्यादि पर आपको अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। इवेंट टीम की हेड मिसेस गायत्री राठौर और को हेड मिस्टर शुभम चौधरी हैं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम सागरिका मेहता है। मैं यूई में पली बड़ी हूँ और कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा हूँ। मेरा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि मैं अपने समाज की हर तरह से मदद कर सकूं। मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से भी सम्मानित किया गया है। मेरी कविताएं 2 एंथोलॉजी का हिस्सा भी हैं। मुझे कई से ओलंपियाड्स में कई सारे मेडल से सम्मानित भी किया गया है। मैं अपनी स्कूल के एनवायरनमेंट कोऑर्डिनेटर, एनवायरनमेंट कमेटी की मेंबर और हेल्थ एंड माइंड क्लब की मेंबर भी हूँ। मुझे फोटोग्राफी, नाचने और पढ़ने का भी बहुत शौक है। आज हम डॉक्टर प्रत्युष श्रीवास्तव और डॉक्टर सक्षम श्रीवास्तव का स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर प्रत्युष श्रीवास्तव ने एमबीबीएस की है और अभी वे एमडी इन केजीएमसी लखनऊ में परस्यू कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हम डॉक्टर सक्षम श्रीवास्तव का स्वागत करना चाहेंगे जिन्होंने एमबीबीएस की है आरएमएल दिल्ली से। नमस्ते। Your camera isn't working. Okay, cool. Just a second. Sure. Wait. Hello. Welcome to Profound Writers. So, my first question to you is why did you choose to become a doctor as your career path? Since all of us know how much time does it take to actually like complete even the course. So, what even inspired you to keep going and become a doctor? Well, actually, I just want to say that since from my childhood, I was very fascinated towards human physiologies and anatomy, bodies, and all the functions. So yeah, and after the process, I started doing all my things, and then I came to know that it was very what to say, man. It was very satisfactory when you see the patient ना कि वो अपना देख वो आते हैं आपके पास वो आपको शो करते हैं, then you treat them, and the satisfaction जो दिखता है वो that is the kick actually. अच्छा.
तो आपको बचपन से यही रहा था कि आपको डॉक्टर बनना है? नहीं, no, no, not at all, not at all. I was very creative, so I wanted to do all the stuff. But during my childhood, because of some specific reason कि कुछ ना कुछ कोई बीमार हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो I was confused between इन दोनों फील्ड में. Then I thought कि what should I do? After that, I मतलब मैंने काफी लोग से कंसल्ट किया. Then I came to know that this thing suits me more. That's why I choose this. And yes, अपनी ultimately बहुत सही लैंड अप हुआ. अपनी स्पेशलिटी के बारे में कुछ बता सकते हैं Yes, लाइक yes. व्हाट हैव यू Hmm. डन? Hmm. Actually, I'm a doctor. I passed MBBS from KGMC, and I started doing my super specialty MD from KGMC. And yes, I'm pursuing it, and it's going on. Let's see. Okay. So what is the best medical success story of your career so far? Well, yes, I would. Yes, this is the best question. I just want to say that initially, मतलब when हम लोग जब अपने इंटर्नशिप में थे, तो हम लोग के एक्चुअली वो हम लोग को पेशेंट टू पेशेंट इंटरेक्शन होता है. तो उसके बाद स्लोली स्लोली अभी तो कुछ वक्त तो कभी कुछ नहीं किक हुआ कि क्या ऐसा अचीवमेंट हो गया. बट आफ्टर दैट व्हेन जब आई मैंने खुद से पेशेंट को जब ट्रीट किया, देन आई द the the satisfaction, he was like thank you, uh, whatever they says कि thank you भैया भगवान. Dude, I must tell you, सबसे amazing feeling, सबसे amazing feeling. He, the way he said कि thank you so much, and it was just a simple medication. And आप वन एक हफ्ते बाद he came and he said thank you so much. उसके अपने पेरेंट्स को मतलब he was very poor and all. Then अपने फैमिली मेंबर्स को लाया था मिलाने के लिए. तो that was a big thing for me, very big thing. Yeah, I can actually understand because even I have gone for scribe duties and also I've seen how Yes, yes. parents are grateful that your small help that you're just dedicating maybe an hour or something, but that is Yes. making a difference in their lives. That is very important to understand. True, true, true. So, what tools and equipment are you familiar with using on patients? Well, it depends on the patient actually, because initially when patient comes, it is the most important thing is the communication and the like आप सामने patient आता है तो उसको कितना आप comfortable कराते हो. Because आधी बीमारी सब लोग को पता है कि आधी बीमारी patient डॉक्टर से बात करके ही नॉर्मल हो जाती है. आधी बीमारी है जो होती है वो पेशेंट को Mm-hmm. देख के बात होती है. द Exactly. मोस्ट Right. इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी कम्युनिकेशन द स्टार्टिंग में इट्स एक्चुअली जो टूल्स होते हैं वो डिपेंड्स ऑन द पेशेंट, राइट? कि उसको क्या मतलब ऑपरेटिव है, नॉन ऑपरेटिव है, जो मतलब देयर इज अ मेनी थिंग. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू टूल आई यूज बेसिकली इन माय डेली बेसिस दैट कि द फर्स्ट ऑफ ऑल द कम्युनिकेशन एंड सेकंड द अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट ही वांट, मतलब ही क्या वो सफर कर रहा है और मैं अपनी तरफ से क्या उसको कन्वे कर सकता हूँ. तो दीज आर द टू बेसिक टूल आई यूज. अदरवाइज देयर आर मेनी इंस्ट्रूमेंट इन प्रोसीजर्स. यस. What are you planning to do after this, after completing your studies and all? What is your next goal? Well, actually, right now I'm like not very clear key what I'm planning to go to the like actually I'm planning to make my own hospital after completing this. Yes, and बाकी let's see. मतलब there is not very specific plan कि ये करना है अपने को. मतलब there is a plan कि थोड़ा सा expand करना है, थोड़ी सी awareness फैलानी है. These are all the things, but in a different way. थोड़ा सा digitally and all. Ji Yes. sir. So, what is your favorite course in the university and why is it your favorite one? Well, my favorite one is surgery because in surgery, the best part of the surgery is that you can whatever you have read or studied, you can apply it over there, right? कि you can कि you जब भी आप ऑपरेशन करते हो आपको सब कुछ चीजें दिखती हैं and you do all the thing. So yeah, it's very fascinating and yes, बहुत ज़्यादा ही adrenaline rush भी उसमें रहता है, तो that's why. Because I know that many people are actually afraid to take up this topic because they believe that it's a very risky one. So, yeah, I'm glad to know that you're actually interested in that. So, along with that, your other friend who is also supposed to join, could you please ask him to join? Yes, sure. Just a second. Just a second. Sure. One second. Well, just can you like एक second? Just give me a second.
Just a second, sorry. Just I think it's fine. Well, I want to say that he's my junior right now, Dr. Hello. Ansh. Hello. Hello, sir. Welcome. So, we were continuing with your other friends. So, if you don't mind, I'll just continue with the same questions with him. So, why did you choose to become a doctor as your career path? I think the idea of basically the idea of helping people was very basic to me, and I've been also like very much into helping animals. And I remember like treating dogs in my locality when they had a like maggot infection or something like that. So the feeling of a patient getting treated or better just because I did something, here and there. So the feeling was very special, and yeah, these were the things in class 8th and 9th, and then I like chose bio, and the circumstances also made me choose bio, and then I further, and then just went on and on. So oh, All by the right. way, I'm sorry, I forgot to introduce myself. My name is Saksham, and I'm like 5th year student in MBBS. Thank you. Other than that, can you please tell us what exactly are you pursuing and what are you planning to do further? What are your further goals? Actually, I have a deep fascination of in dermatology, so I'm definitely gonna try to ace NEET PG and do dermatology furtherwards. But right now, like just keeping my head down and focusing on my MBBS. All right. So, what is the best medical success story of your career so far? I haven't had a lot of like actual practical stuff, but I've had done like an amputation. I recall with some senior residents of my college. So that was a very a good experience for me. It was a simple amputation surgery, but it was a big deal for me because it was my first. So yeah, we amputated the I think I infected toe of a person, and we treated them, and I was there standing and helping them here and there. So it was quite a success for me. All right. So, what tools and equipment are you familiar with using on patients? Like the current the generally I think like tools and equipments are very objective to what like the patient is, and tools and equipments play a very small role as well, I guess. The major role is played by like how I treat the patients, how I behave, how calm and composed I am, and everything. So that plays a even bigger role than like the tools and equipments themselves. What is your favorite course at the university and why is it your favorite? I think the first year physiology was my is my always will be my favorite course, because as I told, I from the childhood I like how actually the human body functions and everything, like how multiple systems come together to do something, and then how do they depend on each other and everything. So that's why my first year biophysiology will always be my favorite. Okay. So, I have this one question for both of you. So, for the last few years, we have been stuck in this COVID pandemic. So, how has it affected your lives as a doctor? I would like to start. I think it has definitely been a bit more stressful for us, because we were supposed to do duties, actual duties during the COVID period, and which were at the end of the day very beneficial for us. Like we got more exposure, but in general, it has been more and more stressful for us now that like COVID. Now that even COVID has passed, it's still like a bit hectic for us generally. but for awareness, it's अभी भी फैल रहा है. Guys, please अभी भी सारी चीजें मेंटेन करें जो आप पहले भी कर रहे थे. Yeah, If you I also can do that. make people aware, the people who are watching it right now, you can do that. Anything you would like to tell, any message for them? आप दोनों कह सकते Well, just want to say that basically actually अभी इधर इधर भी वापस से कोविड का सारा से वापस से आ रहा है, तो बेसिकली जो सारी चीजें की थी सेम चीजें करनी है. हमने सारे सारे टूल सब लोग ने कर रखा था.
hand wash, hygiene, social distancing, mask. These are the basic tool, right? And at the same time, I just want to say that कि जिन्होंने अपना वैक्सीन नहीं लगाई, बहुत लोग डरते हैं वैक्सीन से, बहुत लोगों का कहना है कि उससे हार्ट, there is a different thing, but vaccine is very important because एक स्टेज पे पहुंचने के लिए, लाइक अभी हम लोग यहाँ पे हैं, राइट, विदाउट वैक्सीन, बट आफ्टर वैक्सीन वी विल रीच दिस प्लेस, राइट? तो देयर इज नो लॉस, लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद बहुत सारे मिथ हैं, सब बेकार हैं। गाइस गो एंड, इफ कहीं पे भी अवेलेबल है, अपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो प्लीज गो एंड गेट अ शॉट। I feel the most important thing is the lack of awareness that is there in our country. Exactly. Yes. So that must be promoted. The educating people about the importance of vaccines and how harmful can the COVID be, the coronavirus be, that is very important. Also, other than that, as you know, today is World Health Day. What do you have to tell about that? Anything? Yes, Saksham. I think, like we know, World Health Day is like WHO's founding year, founding date, and everything. So I think WHO is obviously a very important organization, and we have witnessed it in that COVID era period about how it was giving us directions and everything, how it was carrying on the research and promoting and doing things. I think, and generally, 90% of our health can be maintained by our lifestyles themselves. So we definitely have to like focus more on what we eat, what we do, and how much we sleep, and our and everything, surrounding our mental health as well, how we treat each other, how kind are we are to ourselves as well, and as well as others also. So I think the major part of health is this. The rest 10% part, of course, we are here to treat, but the 90% part is clearly upon the you. You are the in charge of that 90% part. So definitely you have to take care of yourself, treat yourself better, so that we can treat you better later on. वेल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू से दैट इधर भी सब लोग देख रहे हैं कि बहुत यंग एज में सबका हार्ट अटैक हो रहा है। मतलब इधर भी आप सब लोगों ने बहुत ही देखा होगा, हर किसी का डेथ हो रहा है। तो किसी को इस बारे में अवेयरनेस बहुत वैसी नहीं है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, इफ यू गाइस आर कंफर्टेबल, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सबको बहुत ही लग रहा है ना कि इस वक्त इतने यंग है, कैसे हार्ट अटैक आ जा रहा है, कैसे हो जा रहा है। तो बेसिकली सबसे पहले बताऊंगा कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉज होता है जेनेटिक। अगर जेनेटिकली है तो देयर इज मतलब देयर यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज जेनेटिक, बिकॉज अगर आपको जेनेटिकली जो भी चीज है वो आपके पास आ चुकी है तो देयर इज नो गोइंग बैक, राइट? एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइफस्टाइल, lack of food, lack of sleep, this lack of food, lack of sleep and lack of stress. जैसे कि आप जो भी लोग आईटी सेक्टर में, अभी रिसेंट स्टडीज के हिसाब से जो भी लोग आईटी सेक्टर्स में हैं उनको हमेशा एक टास्क दिया जाता है, एंड बिकॉज वो टास्क काफी बड़ा होता है तो उनको करने के लिए उनको स्ट्रेस होता है, एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस lack of sleep generate hota hai, and that make the patient more prone to the heart attack, because there are many things, because sleep is very important part of our life. And also there is a factor, smoking and alcohol. These are the factors that promote our heart attack, right? And for that आई थिंक द सिम्टम्स पेशेंट शुड लुक फॉर कि उनको ब्रेथलेसनेस होती है, थोड़ा सा वॉक करेंगे, बैठे रहेंगे तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा, थोड़ा वॉक किया, थोड़ा रन किया तो सांस फूलने लगेगी, इसकी ऑक्सीजन नहीं रहा, बट वो रेस्ट करते वो नॉर्मलाइज होता है। वो एक पहला किक होता है कि पेशेंट को तुरंत अपने डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, फिजिशियन को। ब्रेथलेसनेस एंड स्वेटिंग, चेस्ट पेन, दीज आर द थिंग, राइट? एंड अगर ये सारी चीज होती है, सबसे पहले आपको सारी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। 25 to 30 के बीच में आपको सारे टेस्ट कराने चाहिए। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है स्ट्रेस इको कराना होता है, स्ट्रेस टेस्ट होता है, इसमें आपकी सारी चीजें पता चल जाती है, और उसके बाद यू कैन डू योर थिंग्स, राइट? एंड कोविड का सीन ये है कि कोविड में भी पेशेंट्स को हार्ट अटैक के इश्यूज होते हैं, बिकॉज अभी रिसेंट स्टडीज में बताया गया जिनको भी कोविड रहा है उसकी कोविड एक्चुअली प्रेजेंट इन लाइक एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, लाइक एवरी सिंगल वे। तो अगर आपके हार्ट में है तो हार्ट पे उसका इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, एंड देन इट कॉजेस द हार्ट अटैक एंड ऑल। सो या जैसे अभी आप लोग देख सकते हैं राजू श्रीवास्तव, जितने भी फेमस सेलेब्रिटीज सबकी डेथ हुई, दे आर वेरी एथलेटिक एंड ऑल, राइट? एंड स्टिल दे गॉट एन हार्ट अटैक बिकॉज ऑफ द फूड वी ईट एंड ऑल द फिजिकल एक्टिविटी एंड ऑल द स्ट्रेस। सो गाइस आई जस्ट वांट टू से दैट आप अपनी फिजिकल हेल्थ, फूडिंग हैबिट और अवेयरनेस, जिनको डायबिटीज है उनको एक्चुअली पता नहीं चलता, तो वो डायबिटीज में एक्चुअली कई सारी चीजें ऐसी हो जाती है कि उसमें आपको उसका सिम्टम्स नहीं पता चलता, तो उसके लिए आपको गो एंड चेक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो इट विल रैंडमली हैपन एंड बहुत क्योटिक हो जाता है। एंड यस, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल Saksham to say more stuff on depression, if you like.
Please Yeah. go. Yes, so I think the thing with this whole mental health issue is that basically the lack of awareness there is, and generally people do not give as much as value to their mental health as they give to other things, which definitely backfires. And I think people should consult psychiatrists like every even to the smallest problem they have. The therapy is a great solution to it, and I think they should also be more open about it to their siblings and mothers and fathers and parents and everything. So because the therapy starts from home, so if that space is good and if you're not getting that space, then definitely you should consider therapist and everything, so you get a better solution. So yeah, I think as much as you focus on physical health, this much focus should also be put on mental health, एक्चुअली because it all starts from here. एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोग अपनी परेशानी बताने में बहुत डरते हैं। इनफैक्ट हम लोग जब पेशेंट को देखते हैं तो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो वो बताने से डरते हैं, मतलब कि उनको क्या परेशानी है। सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप व्हाटएवर यू फील आप अपने पेरेंट्स को बताओ, जो जस्ट टेल, बिकॉज़ अगर आप बताओगे तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पर ही खत्म हो जाएगी। to your loved ones especially, right? So it is very important कि अगर आप जो भी you feel, just tell your parents, your brother, sister, उसके बाद you can you will feel very relaxed after that, right? And if you hide and वो धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है and it will मतलब बहुत problematic होता है। It's very important। लोग बताने में बहुत शर्माते हैं, वो बहुत सबसे बड़ी चीज है, प्रॉब्लम है। इसलिए एक Yeah. एटमॉस्फेयर एक अच्छा सराउंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि Exactly। only when you feel that you're comfortable, you're safe within these people is when you're ready to open up and actually even talk about what you genuinely feel or how your day went. So okay, I'll just tell, there's this one thing which my dad always does. Every day we come from school, he'll just call up and just ask us to tell how our day went, so that you can just at least vent out, so that you can Exactly। feel more relaxed, and that's how you can actually feel comfortable. Because even when later on a situation comes up where you feel it's important to talk about, it will just be very simple for you to open up just because you have followed this one practice. Yes, this is the best thing to share। Anything else you want to talk about, either about physical health or mental health, you can do that. I don't really have anything. Well, I think मतलब apart from uh, what to say, मतलब बेसिकली आई जस्ट वांट टू से दैट कि दो तीन चीजें हैं। अगर आप मतलब पहली बात, स्ट्रेस का कोई देयर इज नो नीड टू टेक एनी स्ट्रेस। जो होना है वो हो जाएगा, हमारे पे नहीं है, राइट? यू जस्ट डू योर पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, यू जस्ट डू योर पार्ट एंड यू जस्ट अपने फैमिली के साथ सराउंड रहे, सबसे जरूरी है। लोग इसको मिस आउट कर रहे हैं इसकी वजह से। एंड द मोबाइल कॉज, इफ यू गाइस नो द बिगेस्ट थिंग, मोबाइल कॉज। मोबाइल को मतलब अगर अभी रिसेंट स्टडीज के हिसाब से चल रहा है कि धीरे धीरे जितनी भी हमारी मेंटल स्ट्रेस प्रॉब्लम हो रही है, उसका सारा कॉस्ट 50% मोबाइल ले जा रहा है। अभी रिसेंट स्टडी से पता चला। न्यूयॉर्क, आई गेस अमेरिका का किसी का था ना, किसी का WHO है। तो बेसिकली मोबाइल हो गया, और आप फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, हेल्दी फूड्स, विच इज अगर धीरे धीरे ये सब चीजें अपने घर पे ठीक रहेंगी ना, तो इट विल क्रिएट अ पॉजिटिविटी एंड देन यू विल डू ऑटोमेटिकली ऑल द थिंग्स गुड इन अ गुड वे, राइट? तो यस, Right. दैट्स द बेसिक थिंग, 5 tools। Another question for both of you: what is the biggest challenge you feel as a student who is pursuing or who has completed the MBBS? The biggest challenge you feel in the field of doctors? सक्षम बेटे। I think actually being a doctor wouldn't be that huge of a challenge, but actually this process that exists, MBBS, then NEET PG, and then PG. This process itself is very exhausting and very infuriating to face. So I think there's a lot of improvement needed in that. But the course of MBBS itself is very rigorous. Of course, it has to be, but I think they can also make it a more student friendly. It's not currently as much as student friendly as it should be, and I think the further steps after MBBS, NEET PG exam, and then NEET PG and the PG course itself can also be made that way, because right now it exists in a lot of it's very messy and a tough process to handle for even a 22 or 23-year-old that is going through it. So it's a lot to take. I think Pratyush can add on that.
Well, they actually, it is very tiring. This is super true, man. This is super true. And the time it takes, it's also like, but हाँ ये हर ही जगह इतना टाइम लेता है. Actually ये पाती है ऐसा है, तो you have to इसके साथ बस the thing is that they बहुत सारे improvement की जरूरत हो सकती है. चीजें बहुत different way में भी work कर सकती है, but that is a different thing. But yes, it is a time consuming and tiring. I completely agree. What qualities do you think a good doctor requires? I think the general use of the instruments and everything is very basic to every doctor. Like I think there is no there won't be a like actual qualified doctor who would not know how to operate a monitor or everything and all that. I think what qualities a doctor can have is being very friendly, because I as a person, and my mother also tells me and everything, there are a lot of doctors in the city who people just don't go because they are rude, even though they are like very professional and everything, yet people don't go to them because their behavior is very rude. Too much professionalism is there. I think in general, a good quality of a doctor would be how friendly he gets with his patients. Like, because if you can treat them mentally, you can obviously treat them physically. Exactly. That's the Good communication and understanding. Anything you would like to add? Exactly, that's the thing. Good communication and understanding Hmm. the Correct. patient. What is the hardest part and what is the most fun and rewarding part for you both? I think that you should answer this first. The most hardest part is the process it take and Right. the time it take and the energy it takes. Man, it is so tiring. So I can't tell you. And and what and what is next question is? The most fun or the rewarding part you feel? Rewarding part is obviously I told you Peli initially Yeah. in the initial the satisfaction you see in the Hmm. patient is like supremely satisfactory. Yeah, like if you enter this field with pure passion about the field itself, I think the reward part is would obviously be making a patient healthy from zero. So that is the fun part, and worst part always would be like the process itself, and the rigorness of the course itself. It is meant to be rigorous, and it has to be rigorous because it's a field of a lot of responsibility and everything. So you definitely need to know how to deal with difficult situations. But in general, I think the fun part is obviously the treating the patient. End of the day. So, you mentioned how stressful the life is. So, how do you think you are able to cope up with that stress? What do you think is that one factor that helps you to keep going and cope up with it? Saksham, you will tell because you are in recent working space. That's why. I think what keeps me going. I think you don't know. You don't need daily motivation if you are purely passionate about the field. So what just keeps me going is that there is like every day there is something new to learn. Because like our body ourselves, I don't know everything about my body or someone else, like that, and I don't know about every disease on earth. I don't know about every ailment that can happen. So definitely, I think the keeping going thing is for me is keep going thing is for me is like learning new things every day. Because in every OPD day you see a new patient, basically you see a new disease, right? And मतलब हर दिन you see a different thing, and that is every day there is like कुछ ना कुछ तो एक ऐसा नया मिलता है जिसमें आपको किक आता है. That's why these all the things हम लोग को वो motivated करता है. All right. I had also mentioned like the lack of awareness in our country. So, what do you think can be done to improve that? Other than, um, what do you think are the steps which can be taken by us students or maybe doctors or the government to actually improve this awareness, the level of education that people have? I think the very basic start would be like the meeting like this itself, because everyone has YouTube nowadays and everyone's using it. So very basic start would be YouTube itself, and further on, I think we can go on to like uh, you know uh, uh, general. I think our government already runs a lot of these awareness drives and stuff, and they help.
So I think we're doing enough on the awareness parts. It's just that the education level of people in our country is quite, still low in the areas, like in the rural areas. So it would take time, but I think we would reach to that like complete health awareness in time. I think we're doing enough efforts. For example, a meeting like this or the whole YouTube is itself filled with doctors and their YouTube channels, that and stuff like that. So I think that it definitely helps to spread awareness. But I think it would take a bit of time because our country is not the most educated one on earth. But we would definitely reach there in short time. एंड अवेयरनेस शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम योर होम है, मतलब लाइक बेसिकली तुम्हारे घर से वो शुरू होगा. अगर अपने घर से यू स्टार्ट डूइंग ऑल द स्टफ, देन स्लोली ग्रेजुअली आपके घर पे लोग देखेंगे, देन दे विल, मतलब देयर इज अ साइकिल. अगर अपनी साइड में यू आर डूइंग गुड एंड विद योर पेरेंट्स, विद योर फ्रेंड्स, एंड स्लोली दे विल कम टू नो, दे विल डू ऑल द सेम थिंग. तो मतलब बेसिकली आपको अगर ठीक करना है तो आपको अपने से सही करके ऑटोमेटिकली अवेयरनेस एंड एवरीथिंग विल कम बैक, राइट. अगर आप फिट रहोगे तो आपको दो लोग देख के कहेंगे कि अरे ये तो फिट है, मुझे भी फिट होना है. तो स्लोली, एंड दिस इज ऑल द ट्रैक, सब यही फॉलो करते हैं. Right. एंड अवेयरनेस गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग वेरी हार्ड, मतलब बट स्टिल बहुत सारी स्पेसेस में अभी नहीं हुआ है, बट दे आर वर्किंग. हम लोग इस बारे में अभी डिस्कस भी कर रहे थे, मतलब दे आर वर्किंग इन अ इन वेरी डिफरेंट फील्ड. बट हाँ, अभी इतना अवेयरनेस नहीं फैला है, बट यस धीरे धीरे होगा, टाइम तो लगी रहा है, एंड दैट इज द गवर्नमेंट थिंग. बट वी आर बट जस्ट मतलब मेन ये है कि यू स्टार्ट डूइंग फ्रॉम योर ओन, खुद से, घर से, हर जगह से. You're with your friends, with your families, and all the areas you are living in. Yes, that's. What do you have to tell about the new variant that is coming up? Anything you could tell to even make people aware, the people who are watching this video? Anything for them? Well, just want to say that कोविड सेम है, मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था एक्चुअली कि कोविड का एक्चुअली वो कोविड आपके सराउंडिंग में है, राइट. आपके Hmm. सराउंडिंग में है. अगर जो पहले इम्यून हो चुके हैं उनके में एंटीबॉडी बन चुकी है, तो वो दे आर फाइटिंग, राइट. और जिनके पास पहले से जितनी भी कोविड कोविड की प्रिकॉशंस थी, उनको वो सारी चीजें दोबारा से कंटिन्यू रखनी होगी, क्योंकि अभी तो ऐसा तो नहीं हुआ. अभी रिसेंट अभी आया है कि 5,000 केस आए हुए हैं टोटल, जिसमें से अराउंड 12 पेशेंट की डेथ हो गई है. तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ उससे कि कोविड अभी है, न्यू वेरिएंट इज लाइक इट्स अ सेम थिंग, राइट. बट हाँ, ये जिनकी एंटीबॉडीज नहीं बनी है उनको अभी भी अफेक्ट कर रहा है. एंड धीरे धीरे भी वेरिएंट, एक्चुअली कोविड इज अ वायरस जो जो सेल्फ स्टिमुलेशन, सेल्फ मैनिपुलेट करता है, जो इसी वजह से आपको देखा होगा कि अलग अलग डेल्टा वेरिएंट, ये वेरिएंट, सारे वेरिएंट होते हैं, वो खुद पे अपने पे बहुत चेंजेस करता रहता है. वो आपकी बॉडी में जाएगा, वो यू कांट जज कि आपको कोविड है कि, क्योंकि अपने में वो स्टिमुलेट करता है, बिकॉज आरएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब देयर इज अ वेरी बिग थिंग, राइट. तो इस वजह से और स्लोली स्लोली बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेड ऑल द प्रिकॉशंस जो आप पहले करते आए हो, हैंड वॉश, सैनिटाइजर एंड मास्क एंड एवरीथिंग, एंड क्लीनिंग, मतलब पूरी क्लीननेस. बाकी कोविड का सीन यही है कि वो तो आप आएगा, वो तो हमारे पे नहीं है, बट हाँ, हमें अपनी कंट्रोल करना पड़ेगा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बाकी न्यू वेरिएंट जो आया हुआ है उसमें एज सच इतना डरने की जरूरत नहीं है. आपको अगर वैक्सीन लगे हुए हैं तो आपके बाद उसके बाद एंटीबॉडी बनी होगी, थोड़े बहुत सिम्टम्स आएंगे, बट इट विल बी ओके, राइट. जिनको कोविड ज्यादा इम्पैक्टफुल कर रहा है वो पेशेंट जो डायबिटीज है, हाइपरटेंसिव है. एक्चुअली डायबिटीज में कई सारी चीजें होती है, पेशेंट को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कर देती है, जिसकी वजह से आपको सारी जितनी भी, जैसे आपको कुछ भी बीमारी होती है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है, उस वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है. यूजुअली आप लोग देखे होंगे कोविड के टाइम, मतलब कोविड जिनकी डेथ होती है उनका रेशियो हमेशा 50-40 प्लस होता है, और डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो सारे, या हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं. तो ये सारी क्राइटेरियाज होते हैं. बाकी the only thing you guys can do is take all the precautions, which is like very simple. Would chat करना है? Nice. I would say the same thing pretty much. Also, there was this recent phenomena where people were even mentioning about a connection which was related to gyms and heart attacks. Do you हाँ, think it is a fact or a myth? कोविड, राइट, कोविड. No, gyms and heart attacks. अच्छा, जिनसे हाँ हाँ, नो, मतलब एक्चुअली देयर इज अ अच्छा उसकी बात कर. नहीं, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मतलब कोई भी जिम जाता है तो उसको हमेशा कोई भी फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि बॉडी किस टाइप की है, बॉडी को क्या चाहिए, वो डिपेंड करता है, राइट. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हार्ट फेलियर के कॉज बहुत सारे हैं. आपका फिजिकल एक्सरसाइज है, स्लीप है, स्ट्रेस है, राइट. और
आपका इनफैक्ट आपका कोविड भी है और सबसे इम्पोर्टेंट आपका जेनेटिक, राइट? और हमारा डाइट सबसे कम प्रोटीन, मतलब लेस प्रोटीन इंटेक लेता है। शुगर इंटेक कितना ज्यादा हो गया। पहले हम लोग, पुराने जमाने में लोग जो एक महीने में लेते थे, वो हम लोग एक दिन में लेते हैं। और प्रोसेस फूड कितना चलने लगा, तो कितना खाते हैं सब लोग, एंड फ्राइड फूड ऑल्सो। तो ये दीज आर द फैक्टर्स, वो तो करता है। और अगर आप जिम जाते हो, आपने पूछा जिम 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 माइट बी अ कॉज, राइट? आई थिंक कट गया था। इज इट फाइन? यू कैन सी मी? The voice was little glitchy, but yeah, I can hear you now. Is it fine? Yeah. So yeah, that basically आपको you were asking कि जिम से होता है कि नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है स्पेसिफिकली जिम से होता है कि नहीं होता है। देयर इज मेनी फैक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जेनेटिक। उसके बाद जो जो फैक्टर है वो ऐड होते जाते हैं, लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल एंड फ्राइड फूड, लेस। अभी इधर भी शुगर इंटेक कितना ज्यादा, पहले पहले के जमाने में लोग जो एक महीने में लेते थे, वो हम लोग एक दिन में लेते हैं, लाइक कोक डाइट कोक, सारी यू नो ऑल द थिंग्स, राइट? Possible. Can you please repeat because your अच्छा voice was glitching? अच्छा अच्छा। Is it fine? Can you hear me? Yeah. Is it fine? So yeah, बस यही कह रहा था। I was just saying कि there are many things. एक सेकंड, just a second ना, just a second. Just a second. Yes. अभी आवाज आ रही है? बिल मैं हाँ बता जी, रहा आ था रही है। एक्चुअली, हाँ मैं बस वो बता रहा था कि यू वर आस्किंग कि जिम मतलब बेसिकली यू वर आस्किंग अबाउट हार्ट अटैक, राइट? मैं आपको हार्ट अटैक का बस फिर से एक बार दोबारा से मिनी ब्रीफ कर देता हूँ। एक्चुअली जेनेटिक इज द मोस्ट कॉमन कॉज। उसके बाद जो जो फैक्टर होते हैं वो आपके बढ़ाते जाते हैं, लाइक आपकी फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ अच्छी डाइट नहीं लेना, एंड मेनी थिंग्स लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, दीज आर द फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस योर हार्ट अटैक। ये सारे फैक्टर्स बढ़ाते हैं। But for that, what we can do is कि we can first of all we can do our physical। कोई भी जिम जाता है उसको पहले अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए, ऐसे रैंडम नहीं जाना चाहिए कि मैं जिम जाऊंगा पतला होऊंगा। उसको, क्योंकि हर बॉडी का एक टाइप होता है, उसको कैसे क्या प्रोसेस करता है, वो सारा चीज आपके मेटाबॉलिज्म, देयर इज मेनी थिंग, राइट? तो वो फिजिशियन, मतलब बहुत लंबी स्टडी है एक्चुअली। तो उसको आपका फिजिशियन, मतलब यू ऐसे यू कांट एब्रप्टली चाहे कि मुझे जिम करना, वो नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। एंड एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्राइड फूड को अवॉइड करना, ठीक, राइट? एंड फैट, एक्चुअली फैट बॉडी के लिए नेसेसरी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फैट नहीं लेना, फैट एक स्पेसिफिक अमाउंट पे लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मोबिलाइजेशन करता है बहुत, मतलब इट हेल्प इन मोबिलाइजेशन इन अ डिफरेंट वे। वो आपके ब्रेन में भी जाता है इन लाइक ट्रांसपोर्ट मेनी थिंग्स, राइट? और व्हेनेवर किसी को अगर हार्ट अटैक जैसा कुछ आ रहा है, तो हाउ यू विल जज कि मुझे ना क्या कुछ चेक कराना है कि नहीं कराना है? तो व्हेनेवर लाइक नॉर्मल आप बैठे हो तो आपको नहीं पता चला, बट आप कुछ दौड़ रहे हो या कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको चेस्ट में पेन होगा, आपको ब्रेथलेसनेस होगी, एंड देन यू सिट, देन उसके बाद आपको रिलैक्स हो जा रहा है, दैट इज द मेन इंडिकेशन। उसको एंजाइना हम लोग बोलते हैं। तो आप उसको जाके, अगर जब आपको ये चीज होगा, तो आप यू विल जस्ट गो एंड तुरंत अपने फिजिशियन के पास जाओ। ब्रेथलेसनेस होता है, चेस्ट पेन होता है, स्वेटिंग होता है, मतलब देयर इज चेस्ट पेन, स्वेटिंग, ब्रेथलेसनेस, these are the primary symptoms for the heart attack, है ना? कि एमआई आ रहा है और वो हो जाता है। और इधर भी हम लोग का प्रोटीन इंटेक भी बहुत कम हो गया, प्रोटीन इंटेक, शुगर इंटेक बढ़ गया है कितना ज्यादा। हर चीज आज को हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, दिस मेनी थिंग, राइट? तो इसको भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम कोविड जो है, कोविड की वजह से भी काफी ये सारी चीजें हमें हार्ट अटैक पे इशू कर रही हैं, क्योंकि कोविड की कुछ कुछ लाइक जिनको कोविड है उनके ऐसा देयर इज अ सर्वे जिसमें जिसमें बताया गया कि कोविड के बाद जो वायरस है वो हर बॉडी पार्ट में रेप्लिकेट करता है, इन्फ्लेमेट करता है। इट टेक टाइम्स, राइट? 1-2 साल में इट गोज, मतलब तब तक के लिए वो। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, आई थिंक नेट इज नॉट वर्किंग। Is it fine? Yeah, it's fine. So yeah, this is all the thing I just want to say कि मतलब Actually, मैं आपको हाँ when you were explaining the previous part, we couldn't hear you. ओके ओके ओके।
मतलब बेसिकली आई जस्ट वांट टू से दैट कि अगर किसी को, हाँ, मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट सिम्पटम्स, राइट, कि सिम्पटम्स पेशेंट के कैसे होते हैं, मतलब उनको ब्रेथलेसनेस होती है, चेस्ट पेन होता है, एंड थोड़ा सा वॉक करने पे उनको चेस्ट पेन होने लगेगा, ब्रेथ स्वेटिंग होने लगेगी, राइट। दीज ये सारे सिम्टम्स हैं, और उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे? हम सबसे पहले 25 टू हम 25 टू 30 की एज पे पहले देखेंगे जेनेटिक फैक्टर है, आपके पेरेंट्स को है कि नहीं है, मम्मी पापा किसी को अगर उनको है तो आपके पास डबल चांसेस आपको होने के, राइट। तो आप अपनी जेनेटिक टेस्ट कराओ, अपना स्ट्रेस टेस्ट कराओ, अपना इको टेस्ट कराओ, टेस्ट कर, मतलब देयर इज अ बंच ऑफ लिस्ट, जो एक मिनिमम मिनिमम टेस्ट लाइक सीबीसी ब्लड टेस्ट कराने से यू विल कम टू नो कि आपको वो हार्ट अटैक के चांसेस है कि नहीं है। उसके बाद यू टेक प्रिकॉशंस, मतलब आप चीजें अवॉइड कर सकते हो, लाइक यू अवॉइड स्मोकिंग, क्योंकि पुराने टाइम में भी लोग स्मोकिंग करते थे, लेकिन पुराने टाइम में आपकी फूडिंग हैबिट भी डिफरेंट थी। बट अब अभी भी स्मोकिंग करें, लेकिन इस पर फूडिंग हैबिट बहुत डिफरेंट हो चुकी है। यू टेक लेस ऑफ प्रोटीन एंड मोर शुगर, राइट। तो अपनी डाइट को मेंटेन करो, एंड एक्सरसाइज, टेकिंग फिजिशियन हेल्प, कि मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, कि एब्रुप्टली नहीं जाना चाहिए कि मैं एक्सरसाइज करूंगा पतला हो जाऊंगा, वो और प्रॉब्लमेटिक होता है। And yes, that fried food, especially diet, is very important. I must tell you, most important part. Yes, this is all. Thank you so much for that. Okay. So, have you ever experienced disagreement or a conflict in the workplace with your colleagues? If so, how did you deal with that I'm sure. situation? Sorry. I just called the. I'm sure. Sorry. Can you repeat? So, Yeah, sure. Have you ever experienced disagreement or a conflict in the workplace with your colleagues? If so, how did you deal with that situation? I'm sure. Sure. I think conflicts happen all the time. Like in any workplace, there is no. This is not specific to like being a doctor or anything. But I think dealing with conflicts is pretty much same everywhere. You just have to like keep a calm mind and just listen to other person's perspective and what he's trying to tell. And if still like you don't agree to his her perspective, then you can always like do your own thing. But generally, I think listening to others' advice is very important, even if you don't follow them. But you have to like listen to what they're saying and try to keep a calm mind, because the situations you're working in are very hostile, and like a very small mistake can turn into someone's life or death situation. So yeah, like the conflicts can should be and at all costs be avoided, because like they partly impair your brain because you're in the anger mode. Right. If you would like to add to it, you could do that too. Uh, अच्छा ओके। मतलब हाँ, मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट तो हर ही जगह है, मतलब इट्स लाइक वेरी नॉर्मल, बट हाँ, यू हैव टू डू वर्क, यू हैव टू बी लाइक वेरी लॉयल योर विद योर वर्क, थिंग्स विल वर्क, राइट। मतलब आप अपने कलीग, मतलब आपके जो सीनियर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं, यू ट्रीट इन अ गुड वे। मतलब स्ट्रेस तो हर फील्ड में है, यू गाइस नो आल्सो, हर फील्ड में स्ट्रेस है, हर फील्ड में एक एक मार्क है, यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स, एंड बट हाँ, अल्टीमेटली बस यू हैव, मतलब अपने से यू डू इन अ गुड वे, ऑटोमेटिकली सब लैंड अप कर जाता है अच्छा। I feel like a calm mind is very important. Only if you वेरी have a, इंपॉर्टेंट। then only हाँ you can हाँ yes, cool down the situation and think properly what you can do next to actually rectify that problem. If you think that somewhere it is your problem, if you think that the other person has done something, because if you get angry, it'll just destroy the situation and it'll take it to such a level that it might not be even like fixed later. Calm mind is important, I feel very personally. important, exactly, हाँ exactly, you're right. Other than that, what are your strategies? What are the strategies you use as at a personal level for educating individuals about their health? जैसे कि अगर आपको कोई patient मिलता है तो आप अपनी personal level पे कैसे उनको educate करते हो? Depends if like it's something serious. In those situations, it's obviously very tough to tell patients that you have these and there is a treatment, or sometimes there is not a treatment, and sometimes the treatment is too expensive for the patient, and it's like not worth it even, like the chances are low and everything. So it gets quite tricky to do that. Like that is actually quite a difficult part to do, but we just try to like console them on our part, and just give them everything they need to know about it,
and inform them about the chances and the money that will go in, and like and everything, and the yield, the side effects or whatever there are. So we just try to educate them the fullest so that they can make up their own mind that they what they have to do next. But in general, I think for the easier stuff, like we can it's very easy to advise them for general lifestyle changes and stuff. That part is easy. मतलब basically we inform all the things in a good way. Sorry, just a second. Okay, perfect. Yes, basically we inform everything in a good way so that मतलब उनके लिए जितना भी easily चीजें available हो जाए, हम उनको सारी चीजें inform कर देते हैं कि मतलब वो is it functional or not, सारी चीजें clear करके in a good way, मतलब अपनी तरफ से जितना भी easily उनको inform कर सके easy भाषा में, ताकि उनको भी समझ में आए, and we do all the things to make them comfortable. Actually patient को comfortable करना is very important, ताकि वो अपनी चीजें बहुत, अगर आप जितने अच्छे से यू कामली यू टेल थिंग्स, ही विल टेल यू जो भी होगा वो बताएगा आपको प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद ऑटोमेटिकली यू विल। और प्रॉब्लम ये है कि वो बताते ही फील्स हैप्पी बिकॉज नोबडी शेयर्स राइट, एंड वो बताते ही फील्स, तो कंफर्टेबल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट अ सेकंड। हाँ, एक सेकंड। Right. फाइन। You can continue, sir. Yes, this is all. This is all. Do you have any that you think that stuck to your mind for a period of time, even after you got over in this field? You think that so crucial or was like so it just stuck to your mind or it just struck you completely? Can you repeat for me, please? It's not audible actually. Oh, Yeah. so I was telling that, do you have any situation or any time you remember which actually struck to your mind and it actually shook you completely? Anything of that sort? Any incident you remember? Yes. Like there are many incident, but एक incident मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से याद है। Actually एक मतलब there is a mom and वो अपने बच्चे को लेके आई थी and उनको idea नहीं था, मतलब she was not crying, तो बस वो she was carrying her and उसने मुझे दिखाया and बोला डॉक्टर साहब ये पता नहीं अभी तो बोल रहा था अब ये कुछ बोल नहीं रहा and फिर मैंने स्टेथ लगा के पेशेंट का हार्ट, बच्चे का हार्ट चेक किया and it was not working. एंड शी वाज नॉट अवेयर एट ऑल। उसको लग रहा था कि वो सो रही है, इमेजिन उसको लग रहा था सो रही है। एंड मैंने स्टेप लगाया, फिर मैंने आई चेक ऑल द स्टफ, मैंने सारी चीज ईसीजी सारी चीजें चेक की एंड यू कांट बिलीव जब मैंने उनको मतलब अच्छी तरीके से बताया एंड शी वाज नॉट अवेयर, शी वाज लाइक वो सो रही थी, अभी वो मुंह खोल के सो रही है एंड उसकी आंखें भी खुली है एंड जब आई टोल्ड हर मतलब वो दैट वाज अ डिजास्टर मोमेंट इन माय लाइफ एक्चुअली। मतलब she was very small and like I was in my internship at that time, तो I just पहली बार ही देखा तो मतलब I couldn't sleep for many days, so it was very tough for both of them, for both of us, sorry. Anything you would like to Anything you? I haven't had like a lot of these kinds of incidents yet, but I hope for them to happen. No, I mean, I hope for like positive incidents to happen, so I can share them further. I haven't had any such incidents. You can yet. share positive also, it's okay. No, You I share- haven't. I haven't actually had a lot of these. Actually he is right now in last year, so he will soon he will Alright. see all the stuff, right? Any positive incident you'd like to share? And any positive incidents, there is some like bunch of positive incidents. Anything you felt as देयर लाइक पॉजिटिव इंसिडेंट्स एक्चुअली इतने सारे हो रखे हैं कि मतलब मैं कौन सा वाला बताऊं, आई एम लाइक राइट नाउ कोई कौन भी सा वाला you can mention, that's completely fine. मतलब लाइक पॉजिटिव इंसिडेंट्स मैन कौन सा चूज करूं मैं मतलब देयर इज लाइक देयर आर मेनी थिंग कि कोई भी पेशेंट आता है हम लोग उनको देखते हैं एंड वी जस्ट ट्रीट देम। वो मैंने आपको बताया था कि वो अपने पूरी फैमिली मेंबर्स को लेके आ गया था
कि ये डॉक्टर, वो दिखाने नहीं आया था, ही जस्ट सारे पेरेंट्स अपने वाइफ को, अपने बच्चों को लेके आए थे, ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने हमें ट्रीट किया था, बस इतना करना है। और वो हाँ, उसके बाद कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने लिए डॉक्टर्स जो डॉक्टर हम लोग जैसे किसी को ट्रीट करते थे, देन दे ब्रिंग फूड एंड ऑल कि आप खा लो, बस खा लो। तो दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग, मतलब ये बहुत सारा ये होता है एक्चुअली, हम लोग के साइड ये बहुत होता है, मतलब अपने नॉर्थर्न साइड में ये सब बहुत नॉर्मल है, मतलब दे ट्रीट, लिटरली दे ट्रीट गॉड लाइक डॉक्टर को बहुत ही ज़्यादा गॉड लेवल पे ट्रीट करते हैं। दिस इज़ लाइक सुपर ट्रू। All right. Any of your great case or anything which is like the most memorable to you? Anything you would like to यस, share? यस, यस, दिस ये स्टोरी एक्चुअली मेरे इंटर्नशिप की आई थी। हाँ, हाँ, यस, इंटर्नशिप। तो आई वाज़ लाइक आई मैं पहली बारी एकदम उस वर्क मोड में आया हुआ था, बिकॉज़ के पहले तो स्टडी पर्पस था, उसके बाद आई जस्ट स्टार्टेड, मैं सीधे वर्क मोड में आया था। उसके बाद देयर इज़ अ पेशेंट जो आया, एक्चुअली उनका एम्पुटेशन होना था, एम्पुटेशन पैर का कटना होता है। तो तो उसके बाद हम लोग बाहर थे, जब हम लोग को पता चला, हम लोग भागते-भागते गए। फिर हम लोग देन दिस इज़ माय बेस्ट फीलिंग कि वो पेशेंट, वो एक्चुअली ही वाज़ लाइक कि अब क्या होगा? अब तो मैं बचूँगा नहीं, ऐसा-वैसा मेरा पूरा ये। तो उसके बाद हम लोग ने एक्चुअली पहली बार ही मैंने उनको एम्पुटेशन किया। फिर उसके बाद पूरे स्टिचेस लगाए, एंड तो काफ़ी वो बहुत ही ज़्यादा पहली बार ही एडवेंचरस था, क्योंकि फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग ऑल द स्टफ राइट, सूचर लगा रहे हो, पेशेंट को ब्लड आ रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा fascinating था। That's why I love surgery. Oh, other than that, since there are a lot of things that are happening in one's life, how do you prioritize things? Like, क्या टेक्निक या क्या यूज करते हैं आप अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करने के लिए? Saksham, come on. So Because you are right now your internship, that's why. yeah, I'm about to face my internship. So I think prioritizing study is easy for me right now. I mean, it would be more difficult for him to do this. I think because he's doing like I don't know practicing at the same time for the college. But I think in general, like prioritizing study is fairly easy for me, so it's not quite a task. To be honest, it's not that tough. I mean, I'm in college to study, so I can manage other stuff on Sundays and stuff. But yes, for like daily working doctors, there are many things, because you have to do your work, you have to manage your family, and yes, at the same time, emergencies patient, you have to deal with the emergency treatment as well. Lack of sleep, there is like बहुत सारी चीज होती हैं. Yes, but हाँ, we have to manage. That's what medical is. Right. Can you talk about a time when you were required to collaborate with other healthcare professionals? Any And she collab? have collaborated in WHO. Tell. Oh, Yeah, so I did attend like an event from WHO which was hosted in our college. It was kind of like a seminar or workshop, something like that. So I did collaborate with like a few doctors from I think Tata Hospital, I recall correctly. So yeah, it was definitely a pleasure talking to them and them explaining like different stuff. I had a lot of doubts at that point about the field and everything. So I talked to them and everything. So they quite cleared me out, and it was definitely a good experience. So I haven't had like a collaborative experience on hands-on, but yeah, I'm about to face that soon too. Well, I had done many, मतलब especially the neonatal resuscitation. मतलब actually कोई specifically मैंने कुछ ऐसा join bulk में नहीं किया, I just मेरे खुद से created and काफी लोग को join करवाया हुआ था. It's on neonatal resuscitation, बस like delivery के बाद बच्चे को कैसे manage करते हैं and all. एक तो yes, मैं in fact government also participated, मतलब government people also participated in this. So yeah, it was fun. any recommendations for the students or anything you would like to tell them how to go about this career? Ansh, come on, let's do this. I think if I think you should only enter this field if you have pure passion out of this, because I recall correctly like back in when I was in high school. So I recall people taking biology as a subject because they did not want to face maths, and commerce and arts were too low for them.
So people entered biology with that kind of mindset, and then now they're in colleges sometimes a year below than me also, and now they call up me up and they're like very frustrated with it, and so they're having a tough time surviving. So I think you should only enter this field if you have like pure passion for studying and like actual treating patients and biology and etc. Otherwise this field does get a bit of like help, but like everyone survives out of it. Like that is not a big deal. You come out winner at the end of the day. It's just like it gets a bit tough sometimes if you don't have pure passion for this. Otherwise you do come out winner. So yeah, it's like that. And other than that, I think NEET UG exams and everything, every student knows how to do these stuff, and they do good generally if they like work hard enough. So it's not that big of a deal. So, in your high school, did you take up any internship or any other course which is related to medicine? No, actually, these kinds of opportunity were, of course, very limited from the city I come from. Like the on-hand internships were not actually a thing, but I do recall doing a lot of volunteer work for like local NGO PETA. I'm saying PETA. PFA is an NGO, People for Animals, that was in our city, so I volunteered for them. And then I also did a little internship kind of thing for Greenpeace, which was purely online. So that was also fun. Anything you would like to share? Actually, after going from this phase to this phase, you hardly get a time to do all this because it doesn't come in this pathway, right? Because we are in super speciality, we have to do a totally a different thing. But yes, before, like, at this age, I used to do all this, done all many, like, all this stuff, right? WHO, there are many things. Apart from studies, what do you think were the things that you did in high school that have really helped you right now? I think Making sketch back copy के पीछे help me a lot because मुझे नहीं पता था मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट निकलूंगा. I draw many hard, like, hard in doctors medical term. I draw many sketches. So yeah, वो मुझे बहुत हेल्प किया. And मुझे मतलब as such medical मुझे मतलब that's what I think school is for is for grow, man. मतलब it's like for your growth. Nothing like कि आपकी studies के future में the mental level you grow over there, and yes, that's all the thing. Yeah. तुम तो अभी पास हुई, you tell. yeah, I mean, a school was fun, of course. And there was not a lot of like, uh, what do I say, productive things that I did. I mean, they were productive at that time, but now that I look at it, they weren't really productive. But I did had a lot of fun. So there was nothing in the school that contributed to like where I am, or there's nothing that I use in my fifth year of college. But in general, I think I grew a lot of out of high school, and it was like literally the last time I had a lot of fun. Literally the last time, and ever since I've exited school, it's just like a lot of things. School is for fun, right? School is for fun. But I think there are a lot of people who even stress out on the last few years, maybe 10th, 11th, 12th. So, anything you would like to tell them? Because I have, yeah, 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 because I had. because I have personally seen students, even I myself, it at times becomes very stressful. So, what do you have to say about that situation? Do you think that anything you would like to tell, any advice you would tell them that to just relax and enjoy this time? Because I have seen students not doing that. I think stress is part of the process, but if you have like a proper goal in mind and you're focused enough, I think you can enjoy and study both at the same time. It's not a big deal at all. And stress is, of course, and like a little bit of stress is also very positive. It just keeps you going and like keeps you worrying about what you're doing and what you're not. A little bit stress is okay, but you don't need to stress this way too much, because it's just a part of life and the phase will get over. You just have to be serious and a bit focused about like what you are trying to do in life.
and you can get through the part easily. Well, I think अब बच्चे ज़्यादा परेशान होने लगे हैं. That's what I think. मतलब I used to enjoy, मतलब I used to make sketch copy पे पीछे बैठ के दोस्तों के साथ chill करना है. मतलब मैंने ये किया, but अब actually family pressures इतने ज़्यादा हो गए ना कि वो इंजीनियर बन रहा है, तुम कैसे इंजीनियर नहीं बन रहे हो, वो डॉक्टर बन, तुमको भी बनना. That's why I think ये सारी चीजें बहुत ज़्यादा manipulate करती है बच्चों को, स्पेशली क्योंकि उनको उनको नहीं आइडिया होता है कि बिकॉज दे आर वेरी यंग, उनको नहीं पता है. मतलब एक्चुअली इसमें बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स का होता है. सबसे बड़ा रोल एक्चुअली पेरेंट्स का होता है कि मतलब जितना दे फ्री, दे मतलब उतना दे ग्रो. इट इज वेरी सिंपल. हाँ, दिस इज वेरी सिंपल. अगर आप उनको पहले से बॉन्ड करते जाओगे कि पता है ये करने से ये होता है, तो उनको एक्सपोजर नहीं हुआ, उनको लगेगा यही करने से यही होता है. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक देम फ्री एंड डू, क्योंकि बिकॉज मैं मुझे भी नहीं पता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, बट बन गया डॉक्टर. मुझे भी नहीं पता था कि मैं इसमें लैंड अप करूंगा. तो बट ये है ना कि पाथ चलते जाता है. इट्स बेटर यू पेरेंट्स को एक्चुअली ये चीजें उसमें पेरेंट्स को बहुत बड़ा रोल है. उनको अपने बच्चों को एक्चुअली में फ्री रखना चाहिए. अब नहीं रखते फ्री, मतलब बिकॉज अब बहुत ज्यादा वो हो गया ना कॉम्पिटिटिव फील्ड की. अब आईआईटी बीटेक ये सब दुनिया भर का, तो वो सब चीजें आई डोंट थिंक बिल्कुल सही है. जितना फ्री रखोगे उतना सही है, क्योंकि स्कूल इज फॉर फन एंड नॉट फॉर योर लाइक कि यहाँ पढ़ के आप फर्स्ट आओगे तो आप करियर लाइफ में फर्स्ट आओगे. ये बहुत बड़ा मिथ है, नहीं होगा ऐसा. You just enjoy your life or school life, and yes, and just be free. School life is for fun. Parents must also learn to trust their children that they will do what, like, they will not do anything wrong according to them, and actually keep moving on. And see, मेरे को भी ये लगता है कि स्टूडेंट बच्चों को छोड़ दो, वो अपने आप they will like fall, they will get up and then they will learn on their own, instead of you just telling them at each and every situation, because there will come situations where you have not Exactly. experienced what they will Exactly. do that. So yeah, Hmm. trust and leaving them is very important, I feel. Yes, yes, yes. This is super true. Other than that, what do you think are your strengths and the weaknesses in the workplace you have experienced? Your own. Yes, my strength is because I love to make people smile and laugh. मतलब I use all the stuff and मतलब I'm like a jolly person. That's why ये मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट रखता है. So काफी सब लोग मुझसे बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं. तो ये सारी एक्चुअली फ्रेंडली एंड माय साइड वर्क्स की आई यूज टू, मतलब मेरा ऐसा टारगेट रहता है कि आज कुछ नया क्रिएटिव सीखना है, कुछ नया क्रिएटिव करना है. तो एवरी डे आई यूज टू, मतलब हर दिन मुझे कुछ ना कुछ नेक्स्ट डे के अकॉर्डिंग बेटर बनना रहता है. मतलब ये सब बोलते हैं, बट ये एक्चुअली में ये वर्क करता है. अगर आप इफ यू डू हर दिन एक टारगेट करोगे कि आज कुछ नया सीखना है, आज चलो गिटार सीखूंगा, आज यूकेलेले का एक कॉर्ड सीख लूंगा. तो एग्जैक्टली तो वो हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं. और प्लस आई एम अ जॉली पर्सन, सो सब कुछ मेरे लिए कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा फन वे में हो जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता. इट्स वेरी लाइक इजी, दो टफ बट इट्स इजी. लेट्स आंसर section. I think strength would be the passion for this field, and weakness would be I don't really know. Weakness is making when patient cries in front of you and he says कि नहीं बस ये हो पाया वो पाया. This is the like next level weakness for us, because हमें भी बहुत गिल्ट होता है, but what can we do? हम लोगों ने अपना बेस्ट किया. Strength section, anything? I think that's it about strength. I just like the fields. That's why I'm in. That's just my strength. Making people happy is my strength. What do you like the most about medicine? Medicine is like medicine is a club of every single thing. Like आपको Right. कोई भी बीमारी है, सब medicine, मतलब medicine can see everything. मतलब your every single बीमारी you have. तो and every day you see, मतलब हर एक जो भी आपने पढ़ा है ना, वो आपको दिखेगा. मतलब क्यों पेशेंट का हाथ ऐसे हो रहा है, क्यों उसकी ये इधर डेविएशन है, इसकी नर्व में ये इंजरी है. यू विल कम टू नो, राइट, कि आप इसकी आंख की डेविएट है, इसको व्हाई ही इज यूजिंग ऑल द स्पेक्टिकल्स एंड ऑल दैट. तो ये जो भी आपने पढ़ा है वो आपको वो दिखता है, तो वो थोड़ा सा मजेदार लगता है मेडिसिन में एक्चुअली. सबसे एक्साइटिंग फील्ड कौन सी लगती है आप दोनों को? एक्साइटिंग फील्ड, I think derma for me. dermatology. Yeah, dermatology for me. And medicine, and after that super specialty on nephro, most probably nephro or cardio. Let's see, depends on my result. Okay, so what was the most
difficult part in the medical school other than handling everything together and the stress and all? What do you think? Anything else you have to tell about the most difficult part? Yeah. Missing your social life. Missing your social life. Again, missing your social life. Man, then rest Ansh will tell. Because I feel just one, ये मेरी अकेले की फीलिंग, ये मतलब ये हम सब डॉक्टर्स की फीलिंग होती है कि हम लोग अपनी सोशल लाइफ को मिस आउट करना ही पड़ता है, बाकी सेक्शन विल टेल. Yeah, I think especially in the last years, it's quite like tough to be social and do everything at the same time because the internships and stuff make it more stressful. So yeah, I would say the same that social life just neglects out in your life. When you're choosing doctor as a profession, you have to forget about friends and family for the while. You definitely do get time, but it's like मतलब अल्टीमेटली एवरीथिंग इज गुड, बट आप सब फील्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है. हमारे फील्ड में एक्चुअली सोशल प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर इफ यू आर इन लाइक डिपेंड्स ऑन योर फील्ड. सबसे इम्पोर्टेंट तो आपकी फील्ड पे डिपेंड करता है. इफ यू आर डूइंग सर्जरी गायनी, देन यू तब तो फिर यू विल लाइक आपकी फैमिली पर्सनल लाइफ और बड़ा मिस आउट, मतलब ये मिस आउट हो जाता है काफी ज्यादा. Okay. So, if you had to repeat the entire process again, would you do that? I will run away. Yeah, same. I will run away. I will run more faster than Usain Bolt. And if you had to, what would you do something differently? I would like what you would do. नहीं वैसे I was just kidding. मतलब it was not like मतलब obviously, but हाँ मतलब after reaching this stage I तो love, मतलब ये तो मैंने ऐसे just fun में बोला, but हाँ after reaching this point of my life it is very good. Like मतलब ये फीलिंग को मैंने दोबारा ये किसी और फील्ड में आप यू कांट सी राइट. किसी और फील्ड में ये आपको नहीं दिखेगा. मतलब जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना वो नहीं मिलेगा. सेटिस्फैक्शन ये सिर्फ इसी फील्ड में मिलेगा. और ये फील्ड ये सारी चीज डिमांड करती है. हाँ और बट यू विल रन अवे बाय. I mean, I do still like the field, but I think I can change a lot of stuff that I did. I think back in high school, from there to my first, second, and third year of MBBS or fourth year of MBBS, there are a lot of things I could have been more serious about it, or I could have studied more and everything, and I could have managed my time better than I did. So yeah, that's what I would look to improve. Any incident you think that you didn't regret being a doctor? Any incident you feel related to what doctor? But why? But why? मतलब can you repeat? मतलब As in like अगर कोई incident हुआ होगा, you would like not regret कि you chose the right path, that becoming a doctor was the right decision. Exactly. Just अभी मैंने बताया कि पहले जब इस प्रोसेस में था तो मैं सच में भाग जाना चाहता था कि यार मैं तो नहीं हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये बहुत हो गया. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन जब आप उस जगह पे पहुंच जाते हो ना कि जब आप यू आर प्रैक्टिसिंग राइट, तब यू विल कम टू नो कि मैन ये तो इसके लिए अच्छा, इसके लिए ये लगता है, ओके कूल देन इट्स ओके बिकॉज एवरी सिंगल डे यू सी अ न्यू थिंग, इट्स अ न्यू टास्क एंड इट्स पता है धीरे धीरे तुम्हें पता ही नहीं चलता कि लाइक अरे मेरे एक साल बीत गया, ओ माय गॉड 2 साल बीत गया, ओ माय गॉड. ये होता है, दिस इज वेरी नॉर्मल. जब मैं व्हेन आई वाज इन माय एमबीबीएस लाइफ तो मैं बहुत आई यूज्ड टू रन बिकॉज आई एम वेरी क्रिएटिव एंड ऑल. I used to make my YouTube channel and I used to make many fun stuff. I used to learn many things. And after that, अब MBBS में सिर्फ पढ़ाई, थोड़ा सा फन, पढ़ाई for fun. तो ये काफी problematic था. But after that, when you reach ऐसी स्पेस पे कि you started treating patient and काफी चीज दिखती है तो फिर काफी मजा आता है. Someone has asked in the chats ki something related Fat to fat. loss. Yeah. Fat loss is like fat loss is 60% diet, 40% exercise. Anything else you would like to tell them? 60% डाइट एंड 40% एक्सरसाइज. मतलब बेसिकली अगर आपको अगर जैसे एग्जांपल मैंने भी हाल ही में एक पेशेंट आया था, मतलब फॉर एक सिंपल चेकअप कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं. मैंने उसको सिंपल सा बस बोला कि तुमको शुगर मतलब यू हैव टू टेक शुगर नेचुरल रिसोर्स है, नॉट किसी और से नहीं. एंड यू हैव टू रन, मतलब यू हैव टू रन फॉर मोर देन 10 minutes नॉन स्टॉप.
और आफ्टर लाइक 10 days बहुत ड्रास्टिक चेंज आया था। लाइक सिर्फ सिंपल बेसिक चीजों से, कुछ हार्ड मैंने नहीं किया कि मैंने उसको डाइट पे डाल दिया, कर दिया, मैंने बस कुछ कुछ चीजें उसमें काट दिया कि ये चीजें नहीं लेनी है। एंड यू कांट बिलीव उस बंदे ने आई गेस काफी वेट लूज कर दिया था। मतलब आई कैन सी कि 10 दिन के बाद दिख रहा था ना, तो आई कैन सी पॉप रही तो बहुत वेट लूज कर दिया। सो यार जो भी पूछ रहा है यार, मैं इसको बताऊंगा कि डाइट 60% डाइट को अगर तुमने नेग्लेक्ट कर दिया, फ्राइड फूड, सबको पता है कि डाइट में क्या नहीं लेना है, हम लोग खाते हैं, हमें पसंद भी आता है, बट वो नहीं लेना है, राइट। और फिर हाँ, अगर आप रनिंग या कोई प्रॉपर जिम जा रहे हो, पहले तो किसी फिजिशियन से पूछ लेना जाना सही है कि नहीं है। बट अगर आप नहीं जाना चाह रहे हो, सबसे बेस्ट है यू जस्ट रन दैट बेसिक सिंपल एक्सरसाइज। एंड इफ यू हैव थोड़ा सा ऐड करना है तो स्किपिंग रोप, बस दैट्स इट। वेट रिड्यूस बहुत आराम से होगा, बहुत प्यार से होगा। मतलब ये मैंने काफी लोग पे ट्राई किया और ये वर्क किया है। 60% एट 40% वेट, जो भी है याद रख लो। ओके, और कोई यूनिक चीज आपको लगती है दैट यू हैव इन यू दैट डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम द अदर डॉक्टर्स, दैट एक्चुअली spotlights you, that any unique thing you have, you feel within you? Yes. Like I can, I have a, I can do many things. मतलब apart from a medical thing, I do many things. Like I make my vlogging and on. I have a my मतलब मेरा एक YouTube channel है. Guys, if you can see, subscribe. तो yes, मेरे बहुत सारे मतलब I YouTube channel, I do many stuff. मैं actually stand up comedy भी करता हूँ part time, sometime. तो यस, आई डू मेनी थिंग यार। काफी चीजें करता हूँ। मतलब देयर इज लॉट ऑफ आई मतलब मेरे खुद का इंस्टाग्राम है जिसमें आई मेक रील एंड ऑल। यस, दिस इज सिंस Also, हाँ, द yeah. बेस्ट बेनिफिट आई हैव कि बिकॉज ऑफ माय एज, तो आई लुक मतलब आई बस सबको जल्दी हो गया, तो इस वजह से मे बी शायद उसका उसका एक बहुत प्रॉफिट होता है। बिकॉज पेशेंट वो आपको बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं ना कि अरे अरे ठीक है ना, ऐसे एकदम कि मुझे तो अपने साथ का है ऐसा करके, तो दे कनेक्ट इन अ गुड वे। सो या तो और अच्छा लगता है, मतलब काफी काफी फ्रेंडली हो जाते हैं लोग, तो फिर वो मुझे काफी सही लगता है। ये बहुत डिफरेंट करता है मुझे बाकियों से। यूजुअली डॉक्टर्स को लोग उस पर्सपेक्टिव देखते हैं ना, बड़ा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो यस, Okay. ये थोड़ा सा है। यस। Where do you see yourself in the next 5 years? And this is very tough. This is very tough. This is very tough. After 5 years, oh my god. After Or 5 maybe years, 10 years. Doesn't matter. The next 10 years or 15 also if you want. मतलब आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ एज सच। तो व्हाट In the कैन आई से? field, in the field of medicine, where do you see yourself? मतलब बेसिकली देयर इज लाइक बहुत लॉन्ग टर्म गोल एज सच तो मैंने डिसाइड नहीं किया, बिकॉज आई थिंक मेरा एकदम मोमेंट वाला सीन है कि अभी अभी क्या है, फिर उसके विल सी लेटर ऐसा वाला है। बट हाँ, ये है कि आफ्टर माय मेडिसिन आई विल डू माय सुपर स्पेशलिटी इन कार्डियो और नेफ्रो, व्हाटएवर आई गेट अकॉर्डिंग टू माय मार्क्स। तो यस, उसके बाद आई विल डू, एंड यस एक्चुअली माय मेन मोटिव इज मेकिंग माय ओन हॉस्पिटल इन सम डिफरेंट वे। मतलब इट इज लाइक काफी चीजें हैं, वो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बट हाँ, इन वेरी डिफरेंट वे। All right. So, other than that, how do you handle cases of emergency? कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई मे बी रात को, तो आप वो कैसे हैंडल करते हो? Maybe just you can tell us any small incident. हाँ, अरे इट्स वेरी पॉपुलर। मतलब बेसिकली हम लोग की ड्यूटी पहले जब हम लोग थे, तो उसमें हम लोग की ड्यूटी लगती थी। तो एक्चुअली हम लोग को ड्यूटी आज रहता था, तो कोई भी पेशेंट जैसे देयर इज़ अ गर्ल जिस हाँ, एक्चुअली गाँव में ये बहुत होता है, गाँव में बहुत होता है कि वो डिलीवरी मतलब ऐसा ये मैं एक थोड़ा-सा अवेयरनेस के नाम पे फैलाना चाहता हूँ कि ज गाँव में यूजुअली क्या होता है कि लोगों को ना लड़का चाहिए होता है। तो वो उनको कोई बताता है कि ये दवा खा लो, उससे लड़का होगा। तो उनको पता नहीं होता, वो लोग वो खाते हैं मिल्फी, मतलब देयर इज़ अ ड्रग जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी काम आता है, मतलब वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है। तो वो 6 और 7 मंथ की प्रेग्नेंट वीमेन थी। उसको किसी ने बताया कि इसको खाने से लड़का होता है, उसने खा लिया था। उसका बेबी टर्मिनेट हो गया था एंड शी वाज़ अबाउट टू, लाइक इट वाज़ डेथ वाला सिचुएशन। देन हम लोग ने फिर सब लोग ने मैनेज, मतलब भी हम लोग ने एकदम एब्रप्टली उनको बुलाया, सब मैनेज किया, उसके बाद सब स्टेबल किया, बच्चे की डिलीवरी करवाई, मतलब सिजेरियन सेक्शन से, कि ताकि विमेन मतलब मदर की डेथ ना हो, ऐसा वैसा। तो उसके बाद उसके बाद सब कुछ बड़ा सिंपल सा, सब कुछ अच्छा हो गया। मतलब एक्चुअली इमरजेंसी ड्यूटी इज वेरी फन येट वेरी टायरिंग।
Anything you would like to tell teenagers, any qualities that they should build on, or maybe which they have to become a successful doctor or a good doctor? Or a good doctor. Okay. ओके वेल आई थिंक मैं ऐसा कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी मुझे लगता है ओरिजिनलिटी जो सबकी होगी वो उसको हाँ डॉक्टर बनने के लिए बहुत ही डिफरेंट चीज ये होगी कि यू हैव टू बी लाइक वेरी पढ़ाने वाला बंदा टाइप्स यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मतलब दिस इज वेरी बेसिक कि अदरवाइज मैं किसी को नहीं सजेस्ट करता कि यू डू दिस बिकॉज सबकी अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी होती है इफ वो मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट रादर देन एनीथिंग एल्स और उसके बाद अब जैसे एग्जांपल आई एम डूइंग मेडिसिन तो कोई बंदे को मैं बोलूंगा कि पता है इफ यू डू दिस यू विल क्या पता उसको ऑर्थो बनना हो एंड ही इज लाइक टोटली अ डिफरेंट पर्सन राइट तो ये एंड बेसिक जो है वो हमारी एजुकेशन है जितना एजुकेशन लोगे उतना ज्यादा आपको आइडिया लगेगा बट हाँ डोंट लूज योर ओरिजिनलिटी कि ये करना है ऐसे करना है बी सिंपल बी काम Okay. So, other than that, what do you think? What are your thoughts regarding how do you see the practice of medicine changing in the future? कुछ लगता है आपको कोई changes होगा in the way how it is बहुत अरे लाइक विद इन देयर अभी भी रिसेंटली पता है फॉरेन में एक्चुअली यू नो एआई तो दे आर हायरिंग अ डॉक्टर जो कि एक एआई एक सर बिल्ड हो रहा है कि यू जस्ट टेल योर all the symptoms and he will tell you all the medicine and all मैं like पूरी बीमारी को he will tell you कि क्या है कितना है and everything right तो ये सारी चीज हो रही है और काफी चीजें अब तो सारी तो पूरी मॉनिटराइज हो रही है मतलब लाइक रोबोटिक सर्जरीज भी होने लगी हैं अब तो ये काफी चेंज आने वाला है अभी तो लाइक विद इन 5 to 10 years में यू विल सी ड्रास्टिक डिफरेंस बिकॉज बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है वी जस्ट डू अपने हाथों से Yeah. बट हाँ हाँ many thing but like black कोली you guys don't know but मतलब there is like very छोटे मोटे ऑपरेशन होते हैं ना तो यू अपने हाथों से इंसिजन लगाते हो है ना बट उसमें ना यू आपका मॉनिटर विल कट इन अ वेरी प्रिसाइज वे तो यार काफी चेंज होने वाला है इस 10 years में लाइक बहुत चेंज होने वाला है 5 years में भी यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज पता है Do you एंड feel सिंस डॉक्टर भी हाँ yeah, यस honey, यस सॉरी यू do you टेल see any change in the way how now also in the current situation people more focus on theory rather than practical work? Oh, sorry. Can you repeat because your voice is not. My question was, do you think do you feel there'll be any change in the way how people actually see the importance of more theory rather than practical work? Actually, मतलब they actually MBBS का there is a procedure मतलब उसमें उसमें actually you can't run away कि I will not do practical I will do theory because पता है there अब system ही ऐसा बना दिया उन्होंने कि you have to study and then you go to the hospital you see all the thing and then you go back to your home and study तो बेसिकली उन्होंने ऐसा सर्कल ही बना दिया है कि you can't run away because theory भी उतनी important है and practical भी उतना important है कोई भी एक चीज कम नहीं कर सकते कोई भी एक चीज ज्यादा नहीं कर सकते which is very normal. Also, could you just describe your daily routine as a doctor कि आपको क्या क्या experience करने को मिलता है at a daily base? डेली बेस हाँ. एक्चुअली कुछ नहीं मेरा तो बहुत सिंपल रहता है मैं तो बस आई जस्ट वेक अराउंड woke up around 6:30 to 7 if I just go to gym for an hour उसके बाद I just go to the hospital फिर हॉस्पिटल में देखा उसके बाद फिर डिपेंड्स ऑन द इमरजेंसी ड्यूटी अगर है कि नहीं है फिर 7 के अराउंड आई घर पे एंड देन आई डू ऑल माय थिंग्स आई मेक माय वीडियोस एंड ऑल द स्टफ मतलब पूरा दिन इज लाइक कंप्लीट कि आज कुछ एंड ऑल्सो हमारे संडे में एक्चुअली वैसे संडे सोया नहीं है Also, एक्चुअली हाँ that, how do you actually cope up with challenges in both personal and medical life? फर्स्ट ओह माय गॉड ये तो अंश का क्वेश्चन है सक्षम प्लीज पर्सनल एंड cope up with challenges in personal and Medical. I think there are different ways to do both of them. Personal challenges aren't that huge. Usually, at least I have not faced a lot of big personal challenges.
But yeah, professional challenges are a lot, like an exam coming up, a prof exam, or stuff like that. It's quite tough to deal with, but you just keep a calm mind and just go through it. And that's all it takes. You don't have to panic at all. Like the moment you start panicking, it's gonna go bad from that point. So you don't panic. Panic, please guys, don't panic. It's very important because आपको पता भी नहीं चलता कि आप अचानक से आप पैनिक सिचुएशन में ना, मतलब मैं बहुत सारी चीजें आप पैनिक सिचुएशन, मतलब किसी ने भी देखा होगा यार अपनी फील्ड में कि आपको नहीं हो रहा, उसके बाद यू स्टार्टेड थिंकिंग, उसके बाद वो इतना क्लब्ड हो जाता है, फिर उसके बाद आप यू कैन जस्ट फोकस, विच इज वेरी, तो इसलिए काम रहना बहुत जरूरी है और मूवमेंट में रहना बहुत जरूरी है, जस्ट प्रेजेंट में। तो ये दो तीन चीजें होती है विच विल वर्क मैन, इट विल वर्क। Also, I would even like to ask Dr. Saksham, where do you see yourself next 10 years or the next 15 years? I think the ultimate goal of actually I have a dream of practicing in my own hospital, like which is very general to every doctor, of course. Everyone wants their own hospital. So yeah, it's quite same for me as well. I just have this dream of owning a chain of hospitals across India. So yeah, I'll definitely work on that. So I think I'll have like at least 3 or 4 hospitals in different cities by after 10 years. That's the goal. And also he's planning, वो वाला पता है, he's planning for USMLE American exam. So Oh, yes, he's planning for that also, because since यहाँ पे वहाँ का he's, अब हम लोग का एक plan है, since हम लोग बहुत पास में ही रहते हैं, तो हम लोग ऐसे कि we will go to the foreign and 6 महीने, like there is a 6 month of course to do, मतलब you know all the things कि क्या क्या टेक्नोलॉजी क्या क्या चीजें आ चुकी है जो आपको पता भी नहीं है, तो वहां से यू लर्न एंड यू कम, यू डू ऑल द थिंग। सो ये भी हम लोग के पार्ट ऑफ प्लान है, लेट्स सी क्या होता है। Yeah, earning a lot of money and then like basically earning a lot of money and then establishing a lot of hospitals. That's the goal. all right. Okay, now we'll talk a little about teamwork and leadership. So, how do you think how important are these qualities for a good doctor? I think teamwork is very crucial as like the amount of surgeries and stuff I've observed. Like teamwork is the factor because you have to have uh, coordinating people around you who understand what you're trying to say, who get it get you in and have the knowledge of everything around you. So teamwork is very important, and a team player being a team player definitely helps because sometimes there are surgeries that require 2 or 3 type doctors at the same time. So yeah, teamwork is very important. And leadership, there is not a lot of leadership I think in the hospital. I just this is my personal opinion though, but I like to treat like even the nurses and staff boys pretty much at the same level as I would treat to anyone. So I don't create a lot of difference. I'm not the leader in the operation theater. So I'm just like everyone. I'm just doing my part. Everyone is doing their part. That's all I try to make sure that everyone is doing their part in the operation theater. That's it. That's it, that's it। All right. So, apart from that, what do you think makes a good team? What are the qualities or what are the different factors you think is important for a good team to be created when they're operating, which are like which has to be which will be operating on a person? What do you think are the different aspects that are important to keep in mind? I think the major one would be that they should definitely have all the knowledge it requires, which is of course very basic point. So they definitely should have all the knowledge it requires. And secondly, I think they should be well bonded to each other. This is why I always like. This is why I've always seen like successful doctors, coordinating a lot with their staff members and not treating them like a second grade worker or anything. Rather, arranging for like events and stuff like to make them bond better. So I think bonding is very important because it leads to like a better teamwork at the end of the day. And yeah, that's all I know. I think Pratyush can add more on that. Well, I think मतलब as such तो लीडरशिप, आई डोंट थिंक मतलब वहाँ पे लीडरशिप वर्क करता है। इट्स लाइक सबका एक एक पार्ट होता है, सब सब इट्स लाइक मतलब इट्स लाइक गिव एंड टेक। आप जितना सिंपल तरीके से चीजें रखोगे वो भी करेंगे, सबका इतना एक रोल होता है, उतनी सबको उस लेवल पे वर्क करते हैं, इट ऑटोमेटिकली लैंड अप।
और बस सबका एक मतलब मुझे लगता है उस सिचुएशन में एक हेल्दी कम्युनिकेशन, एक हेल्दी अंडरस्टैंडिंग, एक वही टीम वर्क बनाता है, और इसलिए टीम वर्क वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली इन ऑल दिस ऑपरेटिव प्रोसीजर. All right. So, what are the other things that you think that were very important, or something that you've gained from your work experience or in the field of medicine? What are the things that you have yourself learned from? I know there are a lot of things, but what are the most important things that you've learned? Maybe any interpersonal skill, anything you would like to talk about that? I think it would be the temperament for me. Exactly. The Super temperament true. would be Continue. the temperament would be the thing for me, and yeah, I think that's about it. I cannot recall things I've learned, but temperament is at the top of my mind. So yeah, temperament was very important that I learned. And especially like usually earlier हम लोग बहुत restless होते ना कि ये करना है, अचानक से when you land up it's like calm, शांति, आराम से. तो या बहुत ही मतलब आप बहुत सॉर्टेड हो जाते हो धीरे-धीरे, क्योंकि यूजुअली हम लोग बहुत रेस्टलेस होते हैं ना कि ऐसे करना है, वैसे करना है. फिर वो काम बार-बार मिलते-मिलते यू जस्ट बी काम, दैट्स इट. Yeah. Anything else you'd like to add on that? No, I don't really have Okay. anything at the top of my mind. तो हाउ डू यू एस्टैब्लिश एंड बिल्ड ट्रस्ट विद योर पेशेंट? क्योंकि हम सब जानते हैं जब तक पेशेंट और डॉक्टर के बीच में ट्रस्ट नहीं होता, कुछ थिंग्स डोंट वर्क ऑन. सो व्हाट हाउ डू यू डू दैट? हाउ डू यू डू दैट? गुड कम्युनिकेशन स्किल, मतलब यू जस्ट टॉक इन जैसे जैसे यूजुअली यू कांट टॉक देम, जैसे कोई गांव का पेशेंट आएगा, यू कांट टॉक देम इन बहुत इंग्लिश में, राइट? यू कांट डू यू मीन तो यू जस्ट टॉक उसी के लैंग्वेज में, तो वो बहुत ही लगेगा ये तो हमारे साथ का ही है, ठीक है, मैं इसको सब कुछ शेयर कर सकता हूँ. जितना मुझे लगता है कि जितना बेसिक आप बोलोगे उतना बेसिक आप सब समझेंगे, राइट? एक जितना सिंपल, जितना इजी, जितना बेसिक, जितना सिंपल आप बोलोगे उतना पेशेंट समझेगा, फिर उसको लगेगा कि हाँ मैं बोल सकता हूँ. इफ यू जस्ट रूडली टॉक, मतलब गंदे से बात कर रहे हो ना, यू जस्ट टॉक इन अ डिफरेंट वे, यू तो वो इट विल नॉट वर्क. तो पेशेंट को कंफर्टेबल नहीं होगा, तो वो कुछ बताएगा ही नहीं आपको कि मेरी और भी परेशानी है, बिकॉज एक इफ पेशेंट टेल एक चीज ना कि मुझे बुखार हो रहा है, तो डॉक्टर को और चीजें, हम जैसे लोग को और भी चीजें जाननी होती है कि और क्या अगर, बिकॉज वी हैव टू अल्टीमेटली हमें डायग्नोसिस बनाना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें पता करनी होती है कि और क्या क्या हुआ था और क्या हुआ था. वो तभी बताता है जब आप उसको कंफर्टेबल करो. जब उसको कंफर्टेबल नहीं करोगे तो वो पूरी चीज बता ही नहीं पाएगा. वो बस बताएगा बस बुखार हो रहा है, तो आप यू विल नॉट कम टू नो, देन यू विल राइट जस्ट फॉर सिंपल मेडिसिन एंड जाओ. तो वो भी ही विल वो भी वापस नहीं आएगा कि मतलब मैं अगर फॉलो करूं, वो ठीक भी नहीं होगा. इस वजह से गुड कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन अ गुड वे, इन अ हेल्दी वे और इन अ सिंपल वे. उसी के साथ-साथ मेरे को आपसे पूछना है कि ये कितना सक्सेसफुल हो चुका है कि अभी इंडिया में जो सिचुएशन है, आपको क्या लगता है कि आर पेशेंट्स वेरी कंफर्टेबल विद द डॉक्टर्स? यस, रिसेंट टाइम मतलब अर्लियर तो बिल्कुल नहीं, बट धीरे-धीरे स्लोली आई एम सीइंग कि काफ़ी चेंजेस आ रहा है, लाइक काफ़ी से मतलब इट्स लाइक 50% पॉपुलेशन एकदम चेंज हो गई है कि वो अब थोड़ा-सा बात कर रही है कि ठीक है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है। स्पेशली क्योंकि इधर भी लाइक आफ्टर सिंस फ्रॉम 10 इयर्स के बाद अवेयरनेस का वो जो चला है कि अवेयरनेस इसके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, तो काफ़ी अवेयरनेस फैली, इस वजह से लोग काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हैं। स्पेशली जो जो कि हमारे गाँव साइड के जितने भी फीमेल पेशेंट होती हैं, वो बहुत शर्माती हैं। उनको उनको इतनी सारी बीमारियाँ होती हैं, बहुत शर्माती हैं कि शी कांट टेल अबाउट हर पीरियड्स, राइट? कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो बस उसके बाद स्लोली दे आर आल्सो लाइक कमिंग अप कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है ना? तो दिस इज़ लाइक काफ़ी चेंज हो रहा है थैंक्स टू लाइक ऑल द डिजिटल थिंग्स, स्पेशली अवेयरनेस इतना फैल रहा है, तो इट्स वेरी गुड. एंड हाउ डू यू डेजिग्नेट द टाइम रिक्वायर्ड टू स्पेंड विद ईच एंड एवरी पेशेंट? क्योंकि हर किसी को डिफरेंट टाइप की बीमारी होती है, तो कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो कि किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? आई नो दैट इवन इट्स depending on how severe the condition is. So other than that, how do you determine the time you would be actually motivating it or maybe utilizing it for that patient? टोटली डिपेंड्स ऑन द पेशेंट. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कि पेशेंट के साथ पेशेंट किस बीमारी से आ रहा है. मतलब वी हम हमारा अल्टीमेटली गोल होता है कि हमें डायग्नोसिस पहुंचना होता है एंड उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है. बट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट, डिपेंड्स अपॉन कि क्या बीमारी है, डिपेंड्स अपॉन द क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन है. तो ये सारी चीजें, इट्स ये पूरा पेशेंट पे ओरिएंटेड रहता है कि पेशेंट को कोई बीमारी, जब तक हम डायग्नोसिस नहीं पहुंचेंगे, तो अगर उसमें एक आर लगता है तो एक आर लगेगा.
अगर उसमें 5 मिनट्स लगेगा तो 5 मिनट्स लगेगा. अल्टीमेटली वी हैव टू लैंड अप इन अ डायग्नोसिस एंड अकॉर्डिंगली टाइम लगता है, व्हिच इज वेरी सिंपल. Any message you would like to give at the end? Section first year. We are nearing the end of the session. Anything you'd like to add on? I think for teenage people, if you're entering this field, enter out of pure passion. And it is very fun. It is something new every day. So you'll definitely have a lot of fun while it lasts. And enjoy your school years. That's also very important. And just be serious about it. And that's it. Like this is a very fun field. It's a bit stressful, but fun at the same time. If you start loving, and you'll eventually fall in love with this. Eventually. So it's not a big Once deal. You enter the field with no love. You were forced by your parents. You will eventually fall in love with this. So it's very okay. वेल आई इसमें मेरा एड ऑन पॉइंट ये है कि स्कूल लाइफ को वेस्ट मत करो, उसको एंजॉय करो. कोई प्रेशर नहीं लेना है, सब सही है, सब मजेदार है. जस्ट एंजॉय योर लाइफ. स्कूल लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेशन, हाँ मतलब एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं उसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ उसके चक्कर में अपना फन मिस मत करो, क्योंकि फन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब यू बिकॉज आई थिंक स्कूल में यू लर्न मोर योर स्किल रादर देन योर मेंटल एजुकेशन स्टफ, राइट? बिकॉज उसके बाद सबको कॉलेज जाना पड़ता है. फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली फील्ड का सीन ऐसा है कि यू जस्ट डिसाइड व्हाट यू फील लाइक. बिकॉज इफ यू वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, पहले देख लो कि क्या क्या चीजें लगती हैं, क्या ये दे सकते हो, नहीं दे सकते हो. दे सकते हो तो गो फॉर इट, नहीं दे सकते हो तो लीव इट. सिंपल है ना, दिस इज सिंपल. एंड यस, तो स्पेशली मैं 2-3 चीज और बोलूंगा कि अपनी फिजिकल एक्टिविटीज में जाके बाहर जाओ, वर्क करो, मोबाइल को रख दो थोड़ा सा. Go and guys, you guys please go and work out. It is very important. I'll try avoid as much as possible जो भी है जंक फूड है, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी. कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड कर दो, बिकॉज बहुत शुगर कंटेंट है, डायबिटीज हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज मैंने बोल दिया, एक्सरसाइज मैंने बोल दिया. अगर आपको कुछ भी थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं, डोंट शाय, अपने किसी भी डॉक्टर को बताओ, आसपास जो भी होंगे बहुत सब रेडी हैं आपको ट्रीट करने के लिए. प्लीज गो एंड अपनी किसी की हेल्प लो. इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर ब्रदर सिस्टर, जिसके साथ आप कंफर्टेबल, शेयर योर फीलिंग जितना भी है. बस दैट्स इट. बस आई थिंक अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट है खुश रहना. तो मुझे जो लगता है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है खुश रहना. वेयर जहां पे भी हो, अगर आप खुश हो तो सब कुछ सही है. सो हैप्पीनेस, फैमिली, फूड, गुड हेल्थ, दैट्स इट. ये 4 मोटिव होता है, ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा हो जाता है. Thank you so much, Dr. Saksham and Dr. Pratyush, for joining with us. Thank you so much. It was great having you both. Thank you. Thank you for having us. Thank you for having us. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you. आप सभी का भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो आज वर्ल्ड हेल्थ दिवस के लिए प्रोफाउंड राइटर्स की ओर से ये एक छोटा सा प्रयास था जागरूकता बढ़ाने के लिए. आशा करते हैं आप सभी को मजा आया होगा. धन्यवाद.